and I missed a few of you. Tejas, energetic, fit and active. Okay, how are you this very morning? मेरे पूछने से पहले आपने लिख दिया energetic, fit and active. Speak a bit louder. जान ले लो मेरी तुम लोग अभी. हाँ. कड़क, मस्त. Namaste, namaste Archana. Live and rocking. Jackass. I would love to read how you're feeling this very morning. Fup Chan. Are wah wah. Anjali. Excited. Okay, taka. So, Neha is taka. Motilal ji. Namaste, Motilal. Kailash, namaste. Okay, fresh. What बढ़िया. Type in how you're feeling this very morning. मेरे अंदर महाकाल का रूप आया हुआ है देखो आज. सुप्रभात सर. जबरदस्त. Great. Surrounded with abundance. Oh wow, that's nice. एकदम भारी. Happy. Okay, great. Those of you who have joined in for the first time, welcome to Happy Minds. Welcome to Happy Minds. You can write in your name. You can write in the first time. You can write first and your city you're from. Just name is already there, so you can write your city and you can write first. So I'll come to know if you're attending Happy Minds for the first time, and I'm sure you'll be alive and till by the time the Happy Minds gets over. Feeling blessed, right? This is Lay Bhari, because great, wonderful to see all of you. So Nepal में एक training लीजिए कभी आप. Ajay, welcome from Kathmandu. That's wonderful to have you from Kathmandu. Whenever I'm in Nepal, definitely I'll see if I can have a program there. I'm in Indore, by the way. I'm in Indore today, and I'm in this hotel, so there's some technical challenge here. Came here for a program, and yesterday we went to Ujjain, and I visited Darshan Liye Mahakaleshwar Mandir mein. We were there, so great. चलिए चालू करते हैं. Just a few thoughts about my visit to Mahakaleshwar temple. It's a beautiful, lovely temple. One of those 12 ज्योतिर्लिंग्स में से एक है. तो कभी आप आओ इधर इंदौर में तो यहाँ से, or maybe in Ujjain. So Ujjain is not far away from Indore, 1.5 hours of journey. और बहुत सुंदर मंदिर है. काफ़ी उसकी हिस्ट्री है, काफ़ी बैकग्राउंड है. It was built in I think the 6th century by Kumar Sena, and somewhere it got destroyed in the 12th century. Again, it was built by the Marathas, and again in the 18th century it was again destroyed. Again it was built back, and so 3 बार बना है, 3 बार destroy हुआ है. कहीं ना कहीं a lot of history is there in that wonderful temple, and it is one of those ज्योतिर्लिंग्स जो जहाँ पर ना there is no month for used to give the power to the linga. It is a self-created one. तो बोलते हैं ना कि 12 जगह लाइट गिरी तो 12 pillars of light were made, and that's why 12 ज्योतिर्लिंग्स are there. And the second is it's one of those only ज्योतिर्लिंग्स which is facing south, क्योंकि बोलते हैं कि ये महाकाल मतलब शिवा का सबसे विराट रूप, सबसे फियर्स रूप बोलते हैं महाकाल का. एंड यहाँ एक भीष्म आरती होती है, which is all about the आरती with the ashes. So ashes को बोलते हैं कि it's a purest form, because ash के बाद it can't be changed, it is imperishable, it can't be destroyed, and it has no duality. So ash जो होती है, जो राख होती है, राख, that is the purest form. So 2-3 चीजें हैं यहाँ के बारे में which is very very powerful. So कभी आओ उज्जैन तो you should visit the Mahakaleshwar Mandir. We had a great time yesterday visiting the temple. My voice is very low, ऐसा बोल रहे हैं. Vidisha, you have to give me that clarity from your side. Sir, everyone will have to use earphones and then the volume would be correct. From your side, I believe it's good enough. My side, it's good enough? Yes, sir. Okay. So I got this. I think आप लोगों को थोड़ा सा हल्का सा you have to support me today. My mic system is not here, which I normally use. So आप लोग अपने अपने कान जो है ना नजदीक लगा लो माइक के, and then I would be able to connect with you.
So this is I visited many times. Oh yes, it's great. A few success stories to start with. So let's close the chapter of Ujjain and Mahakaleshwar temple. Kabhi aap aao to idhar, you can visit. A few success stories, and it's great to have a few success stories from different corners. So one of the success stories is from Rohan Munot. The reason I'm here, Rohan Munot की factory है. The company's name is Harnex, and they have their third factory coming up here in Indore, in Pitampura. So it's one of the biggest factories they have come up with. They got two more in Pune, and this is the third one. So आज उनकी फैक्ट्री का इनॉग्रेशन है, एंड ही हैज बीन आफ्टर माय लाइफ फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स कि आप डेट दीजिए. तो 2 महीने पहले डेट ली फ्रॉम मी, and I'm here to inaugurate his new factory and along with the industries minister of Madhya Pradesh. So I'm looking forward to it. It's always great to be a part of growth journeys. It's always great to be a part of beginnings, because beginnings are very exciting. Beginnings have a lot of josh, a lot of janoon, a lot of passion, a lot of energy there. So this today's inauguration is another beginning, and I'm sure Team Harnex, Munot family, it's going to be a great journey for them, a new beginning, which will lead them to greater heights than what they have ever achieved. That's the first success story for today. Second is one from another from a Christian called Vivek Dubhale. He messaged and he says, "Sir, there are he has become a registered research analyst with SEBI, and he says पूरे इंडिया में सिर्फ 814 ही ऐसे रिसर्च एनालिस्ट हैं, and I'm proud to be one of them. So congratulations, Vivek, and all the best." And there's another wonderful thing about Vivek is I known him for last 4 or 5 years, and he was in the IT domain, working in the ERP domain and helping a lot of entrepreneurs there. And whenever I had met him, I'd been to his office, and he had met me a couple of times, and way back in 2018, 19. But I did not see that spark in him. I did not see that excitement whenever he would talk about his business. And then one day he mentioned some years back, I think before pre-COVID time, and he said, "Sir, I want to do this. I want to enter into the world of finance, and especially with stocks and security." I said, "Good enough. Go and try your hand in it." And the way he slogged the last few years, and I messaged him a few days back, and I said, "This is so exciting to know that you have found your calling, because you have been working hard without any results for the last few years just to become better in that area. This reflects your passion." और बहुत से लोगों का ना पैशन की एक चैलेंज होती है कि सब पैशन क्या है, एंड आई ऑलवेज से आई डोंट नो व्हाट योर पैशन एंड हाउ डू यू फाइंड योर पैशन. यू कीप ऑन वॉकिंग इन वन एरिया, एंड इफ यू कीप ऑन फाइंडिंग इट एक्साइटिंग, वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ पैशन इज कि आप जिस एरिया में चल रहे हो, जिस रास्ते पे चल रहे हो, उसमें आपको कोई कामयाबी नहीं मिल रही है, लेकिन आप फिर भी चलने के लिए उत्सुक हो. आपको कोई वाहवाही नहीं मिल रही है, कोई आपकी पीठ नहीं थपथपा रहा है, कोई आपको ऐसा रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, लेकिन आप फिर भी चलने को तैयार हो. कोई रास्ते पर आप चल रहे हो और आप फेल हो रहे हो, लेकिन आप फिर भी चलने को तैयार हो. तो दिस मीन समवेयर कुछ पैशन होगा तभी तो कर रहे हो. ये तो क्यों कोई करेगा? अगर आप कर रहे हो बिकॉज आपको कामयाबी मिल रही है, देन इट मे नॉट बी पैशन. अगर आप कर रहे हो बिकॉज आप फेल नहीं हो रहे हो, देन इट मे नॉट बी पैशन. Passion is something wherein you have high levels of energy. So then that energy makes you go beyond your success and failures. You do it because that's the way you want to be. That's what you want to do. A lot of youngsters, they have this entire challenge of passion, and आजकल बड़ी आवाज हो रही है finding your passion. किताबें लिखी जा रही हैं, किताबें पढ़ी जा रही हैं. People are talking about it. Videos are being made about find your passion. How do you discover your passion? I don't know, यार. मैं तो लाइफ में अगर मेरे से कोई पूछता, सर how did you come to know that speaking, training, facilitating is your passion? I said, I still don't know if it's my passion. I just kept on walking in my life, and then चलते चलते मुझे लग रहा था कि this is it, and I've been through difficult times in this, and I still saw that I was walking way back in 1997, 98, when I started this, I never got any financial success. It took me years to get some financial success, but I just kept on walking. And एक मेरी लाइफ का बड़ा अच्छा सा इंसिडेंट है, मुझे याद है 2001 की बात है, 2000 की बात, and it was just a year into my married life, and a few years into training, and I was going through a difficult time financially. Also, there was a partnership which I was a part of, and
वो पार्टनरशिप हमारी खत्म हुई, and I realized that I was in deep financial mess in terms of the payouts to the market. So करीब 18-20 लाख रुपए मार्केट का देना था, and I did not know what to do and how to pay back that time. And this partnership had dissolved, and after making all the losses, and there I was sitting on the footsteps of my office, and team जा चुकी थी. We didn't have money to pay the salaries. We didn't have money to even pay the telephone bills and electricity bills way back in 2000. So मेरा telephone connect disconnected था, क्योंकि जो previous partnership firm थी, तो nothing happened in terms of the taking care of the operational side. So बिजली कटी हुई थी, telephone कटा हुआ था, and me and Rachna, both of us as a couple, we were sitting on the steps, and we were feeling so low, and यार ये क्या है life अभी, what's going to be our future, we don't know, and so much of debt on our heads. And I had one question which came to my mind, and that very question was the make it question for me, I think, and I believe. And the question was, if I had all the money in my life, would I still continue doing what I was doing? And वो सुबह सुबह वो क्वेश्चन आया मन में कि अगर दुनिया जहान का पैसा होता मेरे पास, तो मैं क्या फिर भी वो करता जो मैं कर रहा हूँ? And surprisingly, it took no time for me to have this clarity. हाँ. And at that moment, it became clear that I'm not doing it only for money. So why should I get disturbed because there's no money? Because I was not doing it for money anyways. And I think that was a turning point in my life. And it took me some years to go back and relate to it. वो उसके बाद life cycle मतलब the life took a turn, and things started happening. And मुझे समझ नहीं आया कि ये life क्यों change हुई. Things why it started happening for me. It took few years for me to go back and realize कि ये कहाँ से शुरू हुआ, ये कहाँ से U-turn चालू हुआ. And I think that U-turn का starting point was that question. That starting point was the clarity which I got from that question. That is it money which you are really working for, or is it that you would just work even if you have all the money in the world? तो मुझे लगता है कि ये जो पैशन का काम होता है ना, जो बोलते हैं पैशन क्या है, we don't know what a passion is. 95% people don't know what a passion is, and it's okay not to know यार. नहीं मालूम क्या तो कौन सा कुछ आप जिंदगी जीने से चूक जाओगे. कुछ ही चंद लोगों को मालूम होता है कि उनका पैशन क्या है, और वो भी ऐसा नहीं कि वो उन्होंने आंखें खोली और उनको पैशन रियलाइज हो गया. वो करते 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 उनको लगा यार दिस इज माय पैशन. तो सचिन को ना डे वन में रियलाइज हुआ कि उसका पैशन है क्रिकेट खेलना. तो उन्होंने खेलना चालू किया होगा, खेलते 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 कुछ साल निकल गए, एंड देन पीपल अराउंड हिम सॉ दैट ही इज प्लेइंग, ही इज गॉट सम नेचुरल बेंड टुवर्ड्स प्लेइंग क्रिकेट. उनको लगा कि इसको और खिलाना चाहिए. उन्होंने और खेला तो और अच्छा खेले, फिर और खिलाया तो और अच्छा खेले, एंड देन इट बिकेम हिज पैशन. दैट्स हाउ इट इज, आई फील एंड आई बिलीव. तो ये जो कहानी होती है पैशन की, इफ यू आर वन हु स्ट्रगलिंग विद दिस थॉट की पैशन मुझे नहीं मालूम मेरा क्या, इट्स ओके यार, इट्स ओके, वी नीड नॉट नो. लेकिन व्हाट यू नीड टू नो इज कि जो आपके पास काम है, जो आप काम कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है तो करो ना उसको. करते करते कहीं अच्छे मुकाम पे पहुंच जाओगे, और अगर अच्छे मुकाम पे पहुंच गए तो फिर और शायद करने की इच्छा होगी, फिर और कुछ करने की इच्छा होगी. बस करते रहो जो सामने काम है. अगर नहीं मालूम कि किस चीज से मोहब्बत है, तो जो सामने है उससे मोहब्बत कर लो. That's my way of looking at life. If I don't know what I love to do, then what I have in front, I will love that. Right? अगर मुझे नहीं, मेरे सामने नहीं है वो चीज़ जो मुझे खाने में पसंद है, तो जो सामने है खाने के लिए, उसको तो मैं दिल से खाऊंगा. That's the way I look at life. So कहाँ से कहाँ बात गई, from this very sharing of this Chrysalis that he got registered. So I shared with him that this is so wonderful that finally you're doing something which comes from your heart. And heart का मतलब क्या है? You're going beyond your likes and dislikes. You're going beyond your success and failures. So it is not that कहीं recognition मिल रहा है, कहीं कामयाबी मिल रही है तो मैं करूँगा. तो and that's the way it is. तो passion को मुझे लगता है वहीं से relate करना चाहिए कि आपकी नाकामयाबी, आपके failures आपको रोक नहीं रहे हैं कहीं जाने से. And those of you who have been in love, anybody has been in love? Um, just say yes.
anybody who has been in love in during your college times and your younger days, and you had an affair. I will not publish this. Don't worry. I'm talking about your that kind of love, जो filmy वाला love होता है, जो प्यार वाला. हाँ? I married my college mate. Wow, that's nice. Ah, Mansi, yours is a love story. Okay. So I'm talking about that love, जो college वाला होता है. It may lead to some kind of a conclusive affair, or it may just have faded out. हो सकता है. You got the person whom you loved, or you did not get the person whom you loved. But I'm sure हम में से बहुत से लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा, कहीं क्रश, कहीं प्यार, कहीं ऐसा लगा होगा, yeah, this is the person of my life. तो आप देखो ना कि when you were in love during those times, and especially during the 70s, 80s, 90s, 2000s, तो बड़ा मुश्किल होता था, in terms of people connecting with each other, or people finding time to stay with each other. तो क्या होता था? Maybe the family side is not agreeing कि भी ये लड़का पसंद नहीं है, कि ये लड़की पसंद नहीं है. So would you give up? No, you would not. You would still go on. You would still fight. You will still, go in and give a blank call. उन दिनों blank call होते थे. You would give a blank call. फिर phones आए तो you would send an SMS. Then you would WhatsApp आया तो you would send a WhatsApp. So you would not give up. So आप fail हो रहे हो, आपको rejection आ रहा है, आपको acceptance नहीं आ रहा है from the family side of the girl or the boy, but you're still not willing to give up. क्यों? That's a reflection of passion on the love side. In the same way, life में अगर आप बात करोगे कि what is passion, तो आप business कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, उसमें आप नाकामयाब होते हो, लेकिन आप फिर भी give up नहीं करते. You still move on. You still keep on walking. It's a reflection of passion. So don't find your passion. Just keep on walking. You will find your passion. Don't find your passion by stopping and asking, what's my passion? I'm saying keep on walking, keep on walking, keep on walking. You'll find your passion. कुछ पकड़ में आया? कुछ पल्ले पड़ा? Am I audible to all of you or not? So those of you who are starting new businesses, those of you who are into startups, those of you who are thinking of doing something, don't worry about your passion. Just keep on doing it with the best of your ability. जो सामने काम है उसमें जान डाल दो. जो सामने काम, it may not be to your liking, but सामने है ना काम, कर दो उसको. It's okay. हम लोग क्या होता है कि we find an excuse of not giving our best, by saying this is not to my liking, this is not what I love to do. Then get out of that place. Or you do it very well. And how told you that this is not what you're liking? Just because it's tough. बहुत से लोगों का ना बड़ा shallow thinking है. उनको जरा सा मुश्किलात आती है, जरा सा एक challenge आता है, and this is not what I like to do. Just because of a challenge, is it out of convenience you're saying this is not what I want to do? Or is it because somewhere कहीं बिल्कुल ही लिंक नहीं कर रहा है? So मुझे लगता है कि ये बहुत सारा misconceptions लोगों के मन में बात बैठ गई है कि find your passion and then you will be successful. नहीं. आप जो काम कर रहे हो उसको अच्छे ढंग से करोगे, then you will be successful. जो काम हाथ में है उसमें जान डाल दोगे, then you will be successful. It is not about only doing things which you love to do. It is doing things with love that you will become successful. Chaliye. Another success story which I have is this is a beautiful, lovely success story. In fact, two of them. One is from Swati Mehta, and she messaged me that she has been using Life Leadership app, and every morning she uses Life Leadership app to fill her to-do list, and every week she says she writes her goals, and every month she writes her goals. So she says, yesterday my son, who's 5 years of age, Hyansh, and Hyansh knows me also very well. So he insisted that he also should write on the app his goals, and he says, "Mama, मेरे goals क्या है? मेरे goals लिखने हैं. मुझे वो जो app use करते हो आप सर का वो app में मुझे goals लिखने हैं." And she said we did not have an app for him, तो मेरे app में उसको entry करवाई. And it is such a wonderful sharing that children at this age, at 5 years, 6 years, they're talking about goals. They're talking about writing something
We don't know how far this will go, but at least शुरुआत तो हुई है. एक बच्चे की लाइफ में, एक 5 साल के बच्चे की लाइफ में एक शब्द आ गया कि आई वांट डायरेक्शन इन लाइफ, आई वांट टू राइट डाउन व्हाट आई विल डू टुडे. तो इमेजिन करो अगर ये बात टिक गई, ये बात रह गई, how far this will go. You never know how far the ripples of goodness go, right? So you don't know how far the ripples of this wonderful realization will go. Another sharing is I was at a function a few days back, and there I met President Vivek Podgan. So he was coming to hug me, and then suddenly his son, maybe around 3.5, 4 years of age, he came running. MG sir, and in Marathi he was saying something. MG sir, MG sir. I had never seen him. I've never met him. And Vivek says, okay, sir, I've been watching your YouTube videos, every HM I watch. And there, along with me, my son, who is 3.5, 4 years of age, he sits and he also watches. And it was वो बोलते हैं कि वो सुन के 2 किलो खून बढ़ जाता है कि अरे wow, this is wonderful. And that little darling was watching he's watched many of my videos, and he could relate and he could connect and he could recognize me when I was in the function. I feel that it's such a wonderful thing that as parents you're doing. You're not only making yourself better, but you're also ensuring that your family in some way or the other is also becoming better. Great. Another success story is from Praveen. He took his entire team out for 2 days, and Praveen Chaudhary, he's an entrepreneur. He was with me with last, I think, almost 11 years. He has been with me, and a few months back we were there together for Arasamasti, my business leadership program. And there, I had insisted in the batch that you take out time and you invest that time with your top leadership team. Fine tune your pathway, fine tune your entire next few years pathway. किस रास्ते पे जाना चाहते हो? What values you should be holding on to? What kind of a vision you would like to have for the company? And I'm so happy that he messaged that he was out for 2.5 days with his senior team, and they came back so very clear about the pathway, the values, and the kind of market share they would like to have in the next few years. And not only for the entrepreneur, I feel for the team it is also very important कि एज अ टीम अगर आप कहीं हो तो आपको भी ये अच्छा लगेगा कि आपके बॉस को मालूम है कहाँ जाना है. And it is so very encouraging to know that this is where the company will go in the next few years. And for that company to go in the next few years at a certain spot, certain place, I need to become so and so better. So जब आपकी कंपनी की क्लैरिटी होती है तो आपकी टीम के पास भी क्लैरिटी आती है कि उनको क्या बनना पड़ेगा वहां जाने के लिए जहां कंपनी जाना चाहती है. Such a wonderful thing. And another thing which I wrote early in the morning for my entrepreneurial group is कि अगर आप entrepreneur हो इस समय तो आप मेरी बात को सुनो. एक बिजनेस में ना 2 जगह होती है. एक जगह होती है जहां पर ओके लेट्स कंपेयर बिजनेस विद अ वॉर कि युद्ध हो रहा होता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वॉर एंड इन्वेजन हैपनिंग इन यूरोप. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड दी वॉर जोन जहां पर एक्चुअल वॉर हो रहा है. राइट. इमेजिन करो पुराने जमाने का वॉर चल रहा है जहां पर ऐसे सिपाही लोग, सोल्जर्स लोग तलवार से लड़ाई लड़ रहे एंड दे आर फाइटिंग. सो दैट्स वेयर द वॉर इज हैपनिंग. और फिर दूर से आप देखो, अगर आपने पिक्चरों में देखा होगा कि ऐसा दूर से आप जूम आउट करो तो एक पहाड़ के ऊपर एक चोटी पे एक वो सेनापति है जो दूरबीन से, ऐसे लंबी दूरबीन से देख रहा है कि वॉर जोन में क्या हो रहा है. और उसका एक खेमा है, उसका एक टेंट है, और टेंट के अंदर उसके पास उसका राजा बैठा हुआ है. द सेनापति कम्स इन एंड सेज कि महाराज जी, ये हमारी सेना यहाँ पर अभी हार गई है या हारने पे है, या हमारी यहाँ पर सेना ने विजय पाली है, ये दक्षिण की दिशा में हम जाना चाहते हैं. एंड देन फ्रॉम देयर दे डिसाइड, दे प्लान आउट, दे सी कौन से उसमें नदी आ रही है, कौन से उसमें पहाड़ आ रहे हैं, कौन से में जंगल है, कहाँ पर दुश्मन ज्यादा है, तो कहाँ पर घुड़सवार भेजने हैं, कहाँ पर सिपाही भेजने हैं, कहाँ पर गोलाबारी करनी है, कहाँ पर तीरंदाज भेजने हैं. सो फ्रॉम देयर दे प्लान एंड देन दे गिव इंस्ट्रक्शंस टू द रिमेनिंग ब्रिगेड्स ऑफ देयर्स. हमने देखा है ना पिक्चरों में. तो imagine करो कि that's what the business is all about. So there is a war zone happening in a business where the war zone में माल बना कि नहीं बना, कितना क्वांटिटी माल बना, कितना बेचा गया, परचेज हुआ कि नहीं हुआ, पैकेजिंग ढंग से हुई कि नहीं हुई है, बिलिंग हुई कि नहीं हुई, इनवॉइसिंग हुई कि नहीं हुई. This is the war zone where there is a fight happening. And then there is a tent which is there where you plan out things कि कितना माल बनाना है, कहाँ मार्केट पे जाना है, कौन कौन से कस्टमर्स तक पहुंचना है, आगे नया प्रोडक्ट क्या बनना है, अच्छा नया मार्केट में भी क्या चेंज आने वाला है. So that's where in your tent, in your khema, you are actually planning and thinking out what has to be done. तो आप समझो उस बात को. और since I am dealing with so many entrepreneurs,
day in and day out. There are entrepreneurs who enter their office and like a soldier, वो अपनी imaginary तलवार निकालते हैं and they start fighting. They start fighting. Fighting means कोई सेल्स में लगा हुआ है, कोई क्वालिटी में लगा है, कोई प्रोडक्शन में लगा हुआ है, कोई बिलिंग में लगा हुआ है, कोई रिकवरी में लगा हुआ है. अरे आप राजा हो, आप सेनापति हो, आपको बैठना है अपने खेमे में, अपने वॉर रूम में, और वहां से प्लानिंग करनी है कि साहब हमने अभी कहाँ कहाँ क्या क्या काम करना है. बट यू लाइक अ टिपिकल सोल्जर, and like many other soldiers in your organization, you start fighting with you start fighting along with them, and sometimes you end up fighting with them only. तो बड़ा जरूरी है ये समझना कि आप कौन हो और आपने उस रोल को अपने हिसाब से निभाना चाहिए. यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योर रोल कि आप सेनापति का आपने रोल लिया हुआ है, यू आर द CEO ऑफ द कंपनी, यू आर द MD ऑफ द कंपनी, और आप एक सोल्जर के माफिक जिंदगी जी रहे हो. इट इज इनजस्टिस टू द रोल, राइट? सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो बहुत से एंटरप्रेन्योर्स अपनी टीम के साथ कंपैरिजन में आ जाते हैं, अपनी टीम के साथ वो 1-to-1 में आ जाते हैं कि दे आर अलोंग विद देयर टीम फाइटिंग इट आउट. तो टीम को भी लगता है यार ये जब तक नहीं आएगा हम भी लड़ाई नहीं करेंगे. फिर टीम को लगने लगता है अच्छा ये तो रूम में बैठा हुआ, हम क्यों लड़े. अरे बाबा, ये आपने रोल पहले से डिफाइन करना चाहिए. बाय द वे यू आर बिहेविंग, दैट आई एम द वन हु इज गोइंग टू स्ट्रेटेजाइज, यू आर द वन हु इज गोइंग टू फाइट, बट आई विल ऑल्सो फाइट विद यू. कि मैं दूर से देख रहा हूं कि मेरी सेना हार रही है, सेना एकदम डिमोटिवेट हो रही है, सेना अनइंस्पायर हो रही है, कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत टूट रही है. तो वहां से राजा क्या करता है, राजा सेनापति वहां से अपने घोड़े में बैठता है और वो भी युद्ध में आ जाता है. लेकिन ये कब होता है? जब उसके टीम का मोरल कम होता है, जब उसको लगता है उसको फ्रंट लाइन से लीड करना चाहिए, जब उसको लगता है कि अभी मुझे अपनी बहादुरी दिखानी पड़ेगी और सेना का मुझे मनोबल ऊपर करना पड़ेगा. उसको जब लगता है कि अभी तो करो या मरो की सिचुएशन है, दैट्स अ टाइम when the leader comes from top and he is fighting along with his soldiers to beat the enemy. लेकिन ये कब होता है? कभी कभार होता है when the army is about to lose. But on a regular basis, the king or the senapati is on top, guiding people from there. अगर वो बीच में आ गया तो गाइड कौन करेगा कि कौन सी दिशा में दुश्मन ज्यादा है, कौन सी दिशा में दुश्मन कम है, ये गाइड कौन करेगा? और बहुत से एंटरप्रेन्योर्स ये गाइड करने में असमर्थ होते हैं, इनकेपेबल होते हैं, बिकॉज दे आर बिजी फाइटिंग. व्हेन दे आर इन द वॉर, हाउ विल यू बी ऑन द वॉर? एंड एज अ लीडर यू गॉट टू बी ऑन, नॉट इन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम. तो जब भी मुझे ऐसी न्यूज मिलती है, आई एम सो हैप्पी दैट सम एंटरप्रेन्योर्स आर लिविंग द लाइफ द वे आई वांट देम टू लिव. हाँ जी, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लीडर्स हैं, कुछ पकड़ में आया? तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या हो. आप सिपाही हो या सम्राट हो. और बहुत से लोगों ने सम्राट की वर्दी पहनी हुई है, सम्राट का ताज पहना हुआ है, हरकतें सारी पूरी सिपाही वाली. And that's what I always keep on reflecting, teaching in all my workshops to all entrepreneurs. Understand your role and play according to that role. लेकिन क्या करें सर, कुछ entrepreneurs सीखते हैं, करते नहीं, कुछ तो सीखते भी नहीं है. बोलता हूँ आ जाओ वर्कशॉप पे, आ जाओ समझो, you'll play, you'll understand your role. But नहीं साहब. And I make things so very simple for entrepreneurs to understand. And in the simplest possible way, I share with them how they can make their lives a lot better. And today we're talking about Harnex opening their third unit in Pitampura. It's a huge investment which the company is doing to open one of the biggest plants in the history of their lives in a new state, in a new city, right? Coming out of Maharashtra, which was their stronghold, now coming into MP. थोड़ा ना कोई छोटा मोटा काम होता है, लेकिन ऐसे थोड़ा ना हुआ कि एक दिन युद्ध लड़ते लड़ते चलो वहां चलते हैं. They must have gone to the drawing room, to the decision making room. There on the drawing board, they must have made the drawings कि अगले 2-3 साल में क्या करना है. So they had this in mind strategically long time back. It didn't just happen overnight. उन्होंने बहुत पहले सोचा कि हमें यहाँ यूनिट खोलना है, क्यों खोलना है,
क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उस पर डिसीजन हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, how much time will it take, what all companies are there, what all competition is going to be there, हमें क्या मार्केट शेयर मिल सकता है, lot of things must have happened, thought over, and then the call take it. And the Mohammed family happens to be a part of my tribe batch also. So I know what it goes behind creating a environment or situation where entrepreneur lives his role to the fullest. Hmm? Ritesh. So we have to be involved at the early stage of startups. Oh, absolutely. When you're a startup, when you're starting a company, you're the one who's to start everything on your own. तो आपको शटर खोलना है, आपको ही सफाई करनी है, आपको ही माल बनाना है, आपको ही माल बेचना है, आपको ही रिकवरी करनी है. Everything has to be done by you. That's what a startup is all about. Many times you don't have the resources, you don't have the wherewithal. आपको ही पूरा स्लीव अप, पूरा हाथ पूरा स्लीव अप करके you have to go and work hard. That's what it is. But ये अगर आप सालों साल तक ही कर रहे हो और अपने आप को आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जा रहे हो, दिस मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट ग्रो. एंड समटाइम्स यू फॉल इन लव विद व्हाट यू हैव बीन डूइंग. तो कोई सफाई करता है तो उसको सफाई से मोहब्बत इतनी हो जाती है, उसको लगता है यही काम है मेरा. और जो इनिशियल सक्सेस मिलती है ना एंटरप्रेन्योर्स को, व्हेन दे वर्क हार्ड, दे स्लॉग, दे आर द वंस हु आर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे आर रशिंग टू ऑफिस, फिर वो लेट नाइट आते हैं, फिर वो सैटरडे भी दे देते हैं, फिर वो संडे भी दे देते हैं काम में, एंड दे स्टार्ट गेटिंग सक्सेस बिकॉज इनिशियली दैट्स द मॉडल ऑल अबाउट. द मॉडल इज ऑल अबाउट आप कितना इनपुट करोगे फिजिकली और उतना आपको आउटपुट मिलेगा. तो उनको ऐसा भ्रम हो जाता है, उनको ऐसा इल्यूजन हो जाता है कि यही तरीका है कामयाबी का, कि मैं जितनी और मेहनत करूंगा अपने प्रेजेंस से उतना और बिजनेस आएगा, ये उनको लगने लगता है. एंड दिस इल्यूजन बिकम्स द बिगेस्ट हर्डल फॉर एंटरप्रेन्योर्स, द बिगेस्ट हर्डल फॉर एंटरप्रेन्योर्स. दे स्टॉप ग्रोइंग बिकॉज आप कितना इनपुट दे पाओगे उसकी भी एक लिमिट है ना, उसके ऊपर आप दे नहीं पाओगे इनपुट. आप कितना खुद सेल्स कर लोगे, आप कितना कितना खुद से प्रोडक्शन पर ध्यान दे लोगे, आप कितना खुद से रिकवरी में ध्यान दे लोगे, तो फिर आपकी एक लिमिटेशन आएगी and that's where you will get stuck. So getting out from there and moving to the next orbit, ये एक ट्रिकी सिचुएशन होती है बिकॉज आपने अनजाने जाने में पिछले 5, 10, 15 सालों में बिजनेस को अपने ऊपर निर्भर करा दिया है. अब आप वहां से निकलने की सोचते हो तो आपको लगता है ये सारा बिजनेस आपके सर पे ऐसा गिर जाएगा, क्योंकि अनजाने में आप ही बन गए हो सेंट्रल पिलर ऑफ द बिजनेस. अनजाने में यू हैव आस्क्ड, यू हैव मेड द सिचुएशन सच दैट एवरीथिंग कम्स ऑन योर टेबल. And now if I ask you in my workshops, अभी आप बाहर निकलो, तो suddenly you feel कि ये तो पूरी छत नीचे गिर जाएगी, काम कैसे होगा. And even people under you, they start believing, they start living कि हर काम बॉस से पूछ के होना है. उनको भी नहीं लगता कि वो खुद कुछ कर सकते. And then it's a vicious cycle which people go into. Anyway, the subject is not that for today. The subject is to make you understand that if you're a leader, if you're an entrepreneur, then you're supposed to spend more time strategizing. You're supposed to spend more time thinking about the future than doing things in the organization. That's what you're supposed to do. और उसके लिए आपको ये युद्ध की मारामारी से बाहर निकलना पड़ेगा. अगर इवन आपको अगर मोहब्बत भी है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा. और अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं निकल पाते हो या आपको इच्छा ही नहीं निकलने की, आपको युद्ध करने में बड़ा मजा आता है, तो आप युद्ध करो ना, लेकिन किसी और को तो लेके आओ जो ऊपर बैठे और आपसे वो करवाए जो आपने करना चाहिए. प्रॉब्लम कब आती है, जब आप युद्ध करते रहते हो, वो भी छोड़ते नहीं हो और किसी और को भी लाते नहीं हो जो ऊपर टेंट में बैठ के प्लानिंग करे. दैट्स व्हेयर द प्रॉब्लम इज. सो इज इट मेकिंग सेंस टू यू? Another success story is we had a great training. I had a great training with Rajesh Mandlik and his company Setco Spindles. That's what it is all about. You understand things from a perspective of an entrepreneur, from a leader. So Rajesh, being an MD of his company, he realized that whatever he has learned, understood in terms of the programs which he has done with me, whatever he has understood from the way he has been functioning in his organization, अभी इनकी टीम को अलाइन करना चाहिए उस बारे में. And he got his entire top team, the 8 guys who are now the pillars of his organization. उनको वो लेके आए मेरे पास और कहा कि सर आप इनको अभी टाइम दीजिए, जैसे आपने मुझे बताया अभी आप इनको बताइए.
And I'm sure the way you will share, they pick up things from me as a boss, but then coming from the horse's mouth will be very different. And I took a wonderful 1 day program with them about on business leadership, and it was so wonderful. It's a small audience, but senior people of the organization getting aligned to what Setco Sprint is all about. So that's what an entrepreneur does, बिकॉज उसको समझ में आता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उतनी काबिल है जितनी उसकी टीम की काबिलियत. एक ऑर्गेनाइजेशन एन ऑर्गेनाइजेशन इज एज केपेबल एज द कैपेबिलिटी ऑफ इट्स टीम. बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल. अब ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है यही ठंडे हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल है यही नाकाबिल है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है यही इनके अंदर कुछ कमी है. हाउ विल द ऑर्गेनाइजेशन बिकम सक्सेसफुल? इट्स अ टीम. And as a team, everybody in the team has to be capable of being of playing that role in the team. It's a team of let's say it's a cricket team. So somebody is a bowler, somebody is a batsman, somebody is a wicket keeper. तो सब में अपने अपने रोल में माहिर होना चाहिए और उस काबिलियत को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए. That's what a team is supposed to do, and that's a captain's role. कि वो आइडेंटिफाई करता है कि यार ये कौन सा इसमें प्लेयर वीक है, तो क्या ये वीक है काबिलियत वाइज, तो इसकी काबिलियत इंप्रूव कर देते हैं. क्या इसकी नीयत में कहीं प्रॉब्लम है तो नीयत ठीक कर देते हैं. कहीं इसकी सोच में प्रॉब्लम है तो सोच ठीक कर देते हैं, बिकॉज टीम का हिस्सा है. और जब वो ठीक करते हैं फिर जान लगाता है लीडर अपनी टीम की, और कुछ समय बाद लगता है कि यार इतना मैंने जान लगा दी फिर भी ये टीम प्लेयर ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर उसको वो गुड बाय बोलता है. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एंटरप्रेन्योर जो है हायर करते हैं लोगों को, एंड दे जस्ट हायर पीपल बेस्ड ऑन द इंटरव्यू. और इंटरव्यू में उनको लगता है कि जब हायर कर लिया तो जितना सैलरी देते हैं उतना ही ये लोग काबिल होते हैं. ऐसा नहीं होता. उन्होंने कहीं भी काम किया हो, कितनी भी काबिलियत हो, जब आपकी कंपनी में आते हैं तो आपकी कंपनी नई है. इट्स अ डिफरेंट कंपनी. आपके प्रोडक्ट्स अलग हैं, आपका कल्चर अलग है, आपका वे ऑफ फंक्शनिंग अलग है, आपकी सोच अलग है, आपका विजन अलग है, बिकॉज यू आर अ डिफरेंट कंपनी. हाउ कैन यू बी लाइक समबडी एल्सेस कंपनी? तो वो इंसान उस कंपनी को छोड़ के आपकी कंपनी में आया है. यू गॉट टू गिव हिम ट्रेनिंग, यू हैव टू गिव हिम क्लैरिटी, यू हैव टू टेल हिम हु यू आर, यू हैव टू टेल हिम हाउ यू फंक्शन, यू हैव टू अलाइन हिम विद योर वैल्यूज, योर कल्चर. और जब एक एंटरप्रेन्योर ऐसा करने से चूक जाता है, नॉन अलाइनमेंट होता है. और जब नॉन अलाइनमेंट होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है. प्रोडक्टिविटी कम होती है तो झिकझिकबाजी होती है उस टीम मेंबर के साथ, क्योंकि आप सैलरी अच्छी दे रहे होते हो और आपको एक्सपेक्टेशन होता है कि यार ये तो इसने तो अच्छा काम करना चाहिए, तो आप सैलरी अच्छी दे रहे हो, झिकझिकबाजी होती है, फिर एक दिन क्या होता है, आप उसको गुस्से में हटा देते हो. एंड दैट्स हाउ यू लूज अ ग्रेट गाय. नॉट बिकॉज ही वॉज नॉट अ परफॉर्मर, बट बिकॉज यू डिड नॉट मेक हिम अ परफॉर्मर. लोग परफॉर्मर्स होते हैं, लेकिन हमने उनके परफॉर्मेंस को निकालने की काबिलियत हमारे अंदर होनी चाहिए. And we miss out many times on that. So I just shared with you two aspects of business. I don't know if how many of you are entrepreneurs there. Just started from this very aspect that as leaders, as entrepreneurs, you've got to be more on the strategizing side, the thinking side, and less in the action side, right? And that invasion of Ukraine is happening. We all know about it. Do you think Putin is there in one of the tanks there, and he's fighting those tanks on the Ukrainian army, or he's there somewhere in Moscow and strategizing from there, and every moment he's getting the clarity of what's happening. That's what he's supposed to do. Same is the case with the Ukrainian army. तो उनका जो लीडर होगा फिर ना वो बाहर जाके जंग में लड़ा हुआ है. He is there planning what's happening, and he's getting data from everywhere, and based on the data he is deciding what to do. तो आप अपनी आर्मी में, आप अपने छावनी में क्या कर रहे हो? Are you the one who's fighting, or are you the one who is strategizing? That's one. And second is the insight from Rajesh's experience, which I want to share with you, is just because you've hired them expensive, or just because they are from a senior, or they are in a senior position, there is no guarantee team will perform. You will still have to give inputs to them. You will still have to handhold them. You will still have to train them to make them performers. People are capable of performing
वी शुड बी एज लीडर्स केपेबल ऑफ टेकिंग दैट परफॉर्मेंस आउट। तो आपने सुना है ना, और मैं हमेशा अपने वर्कशॉप से बोलता हूँ, लेट मी टेल यू वन मोर टाइम, कि हम लोग जाते हैं गाँव में, या हमने कभी देखा है कि टीवी में या कहीं, वी गो टू अ कैटल शेड, तो आपने देखा गाय को दूध देते हुए? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन cows giving milk? Say, type yes. How many of you have seen cows giving milk on TV or live, और आपके घर में गांव में कभी आपने देखा हो? Seen cows giving milk? Great. Say why or yes if you have seen cows giving milk. Let me share with you one thing. Okay, good. So many of you, wow. आप लोग जाते हो वहाँ पर, या आपने टीवी में देखा है? Okay. So many of you have seen. In fact, all of us, if I were to say, how many of you have seen, you would all say, yes, I have seen, I have seen, I have seen. लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि गाय कभी दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। Am I right or not? गाय कभी दूध देती नहीं है, लेकिन क्या गाय के पास दूध है? हाँ है, तो दूध निकालना पड़ता है। द सेम वे, क्या टीम के अंदर परफॉर्मेंस है? हाँ है, हमें परफॉर्मेंस निकालना पड़ता है एज लीडर्स, और यही हम चूक जाते हैं, क्योंकि हमने उसको लेके आ गए। अब हम गाय को घर में लेके आ गए, हम कह रहे हैं गाय दूध दे, इतनी महंगी गाय है, जर्सी गाय है, दूध दे, गिर गाय है, A2 क्वालिटी दूध दे। और गाय खड़ी है, वो भी कहती है ये एड़े आदमी, मैं दूध कहां से दूंगी, तुझे दूध निकालना है। एंड राइट और नॉट? सो बहुत से हम में से ऐसे लोग हैं जो ऐसी महंगी महंगी गाय लाके हमने अपने घर में रखी, अपने ऑफिस में रखी हुई है, और ये गाय से हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने, जस्ट बिकॉज वी बॉट देम एक्सपेंसिव, जस्ट बिकॉज दे आर ऑफ अ ग्रेट ब्रीड, जस्ट बिकॉज वी थिंक दे आर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ कि हम जहाँ से लाए हैं, जस्ट बिकॉज दे मे बी ऑफ फॉरेन मेक, जस्ट बिकॉज दे हैव अ रेपुटेशन कि ऐसी गाय इतना दूध देती है, फिर ना वो दूध देंगी। दूध तो फिर भी निकालना पड़ेगा साहब, निकालना पड़ेगा। और जिसको दूध निकालना नहीं आता, वो कितनी भी अच्छी गाय होने दो, उसको दूध नहीं मिलेगा। कितनी भी अच्छी गाय होने दो, आपको दूध निकालना आना चाहिए। और बहुत से लोगों ने एक नहीं 5-6 गाय रखी है अपने ऑफिस में, महंगी महंगी वाली, एंड दे ब्लीडिंग, उनको खाना अच्छा जा रहा है, चारा जा रहा है, मेडिकल एड जा रही है, और भयंकर उनको चारा जा रहा है। And the cash is being spent on the upkeep of these cows in the office. And sadly, unfortunately, these leaders, these entrepreneurs, they have not put in their efforts to understand how to milk these cows. और कभी कभी तो मैं बड़ा आश्चर्य, आई एम सरप्राइज बाय द वे एंटरप्रेन्योर्स बिहेव, कि यहाँ लाखों रुपए आपका जा रहा है पगार में, लेकिन आप अपने ऊपर कुछ पैसा खर्च करके एक अच्छा लीडर बनने को आप सीखने को तैयार नहीं। बड़े आश्चर्य की बात, that you're willing to, it's okay to spend money there, lose money, spending, lose money, but somewhere the very thought कि मैं अच्छा लीडर बन जाऊं, उसके लिए अगर मुझे कहीं वर्कशॉप पे जाना पड़े, कहीं साहब एमजी सर का प्रोग्राम करना पड़े, उसमें आप सोचते हो कि यार पैसा खर्च करूं नहीं करूं। अरे राजा, ये खुद को अच्छा बनाने में जो इन्वेस्टमेंट करोगे, उससे ये बाकी इन्वेस्टमेंट्स को आप जूस आउट कर पाओगे। बट सरप्राइजिंग इज द वे पीपल फंक्शन। सर देखो, आज आप, इनफैक्ट आज बहुत से लोग ऑफिस जाएंगे एंड दे विल सी अराउंड देम कितनी गायें हैं जो आपके आसपास हैं, जो दूध दे सकती हैं, लेकिन आपने दूध निकालना नहीं सीखा। और अगर मेरे लीडरशिप प्रोग्राम में अगर आप कभी आए हो या आए होंगे, तो आपने ये भी समझा होगा मेरे प्रोग्राम्स में कि हर गाय का दूध निकालने का तरीका अलग होता है। तो अगर वो जर्सी गाय है तो उसका तरीका अलग है, अगर गिर गाय है तो उसका अलग है, अगर देसी गाय है तो उसका बिल्कुल अलग तरीका है। कौन सी गाय लात मारती है, कौन सी गाय को चारा देना पड़ता है, कौन सी गाय को समझाना पड़ता है, कौन सी गाय को प्यार करना पड़ता है, कौन सी गाय से रिश्ता बनाना पड़ता है दूध निकालने से पहले, ये तो समझना चाहिए। हम सभी के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट करते हैं, एंड दैट्स हाउ मेनी टाइम्स वी मिस आउट ऑन लीडरशिप ऑल्सो। ओह,
Sir, many times I get an opportunity to interact with Arish Manglish, sir. He is behind the company where I work. Simply great inspiration. Absolutely. Great entrepreneurs are great inspiration for everybody around. So, tell me your insights. अभी तक हमने जो समझा है सुबह अभी तक मैंने जो आपसे बात करी है, tell me a few insights which you have been able to pick up so far. All the A's of my life, the Adityas, the Ajays and Ankits of my life, Anirudhs of my life, and till the last Y's of my life, of Yogitas and Yatin Mistris and Vikrant Shindes of my life, आपने अभी तक between A and Y, जितने भी आप लोग हो, give me one insight which I picked up since morning, since the time I started Happy Minds. पावरगरी मत करो. You have to understand a role and act accordingly. Absolutely right. Kao's example was great. No, love the work you're doing. Be a contributor. People, very good. Anjuman, write your insights. Not because I want to know what I spoke, but because you should know what you heard. You should know what you have heard. Give me your insights. Manish says, सम्राट को सिपाही की तरह काम मत करो. Absolutely. This is the Arasamasti terminology. Change your horses. As a leader, you are the one who can bring the best out of the team. Absolutely. That's why we are a leader, right? That's why we are a leader. Be passionate. Passionate मतलब हाँ, don't worry about your passion. Be passionate about your work. जो भी सामने है उसके लिए दीवाने हो जाओ. शादी हो जाए, अब जो है सामने शादी होगी ना उसके साथ, अब उसके लिए दीवाने हो जाओ. कुछ लोग तो शादी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको वो सही प्यार नहीं मिल पा रहा है. अरे उम्र निकल जाएगी. Don't wait for passion discovery. Act what is in front of you. Absolutely, Yatin, you got it. Absolutely right. जो सामने है उसके लिए passionate हो जाओ. 90% time is to be spent in planning. Absolutely, जितना हो सके planning में time दो. It can be 90, it can be 70, it can be 60, but it can't be zero. It can't be zero. If I love to fight, I need to appoint high authorities for strategy. Absolutely. अगर आपको मोहब्बत है नरेश रोज की सेल्स करने में, रोज की फावड़गिरी करने में, कोई गम नहीं है. आपको मजा आ रहा है ना, करो ना. लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई तो चाहिए जो लीड करेगा, तो लीडर लेके आ जाओ. प्रॉब्लम कब है? हमें लीडर भी नहीं लाना है क्योंकि हमें अपने सर पे कोई नहीं चाहिए और हम काम भी नीचे वाला करेंगे, तो फिर एक बहुत ही डिजास्ट्रस कॉम्बिनेशन. Keep following your passion. If you don't know what your passion is, following whatever you are doing passionately. Absolutely, Anjali. A question I have, dear sir, my question is about last time you were told that you need to control what is in your hand and what has happened to us. It is now in our control. Due to office politics and new management, I had to resign from the company. I dedicated 13 years service. I am not able to forget it. How to deal with it? The only way, Santosh, okay, let me clear the subject and I'll move on to yours. In business, all should be placed in their appropriate place. बिल्कुल. धना, absolutely right. आज का निचोड़ अच्छी गाय भी दूध निकालना, अच्छी गाय का भी दूध निकालना पड़ता है. आज की बात का निचोड़. ग्रेट. ठीक है. Just want to share this with you one more time. The Life 360 batch is round the corner. Some of you are still on the thinking side कि करूं कि नहीं करूं. If you're in Pune, if you can come to Pune, मेरा आपसे strong recommendation है, don't miss this batch. And don't miss the batch if you're thinking about, अरे यार, I have to spend money on myself. I think it's the best thing you can do for yourself is to invest on yourself. क्योंकि आप जब किसी से प्यार करते हो ना, तो आप उस इंसान पे कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको गिफ्ट देते हो, उसके अच्छे कपड़े लाते हो, उसको कुछ सिखाना चाहते हो, उसको अपना कुछ ख्याल रखना चाहते हो. ऐसा होता है ना when you love somebody. So if you love yourself, then you will take care of your body, right? तो अगर आप मोटे हो, अगर आप अनहेल्दी हो, इसका मतलब आप खुद से प्यार नहीं करते. अगर आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो, इसका मतलब आप खुद से प्यार नहीं करते. अगर आप अच्छी बातें नहीं करते, इसका मतलब आप खुद से प्यार नहीं करते.
और अगर आप खुद को अच्छा नहीं सिखाते हो, नहीं पढ़ाते हो, तो फिर आप खुद से प्यार नहीं करते। जो खुद से करे प्यार, वो सेल्फ ग्रोथ से कैसे करे इनकार? क्या बात, क्या डायलॉग मारा। जो वो बोलता ना, वो उसका प्रेस्टीज कुकर था ना, जो जो बीवी से करे प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। जो जो खुद से करे प्यार, वो सेल्फ ग्रोथ से कैसे करे इनकार। So Life 360 batch is around the corner, and I feel it's those of you who are keen, interested on being a part of it. It's on 11th, 12th, and 13th of March. Be there if you can come to Pune for those 3 days. Nothing like it. It's a 138th batch, which is happening. Thousands of Chrysalians have done this, and trust me, it has been the turning point in their lives. Turning point means turning point. So even if your senior leadership is there, you feel that the leadership team should be a part of the batch, then send them in. As an entrepreneur, as a leader, you got to make your team very powerful. Doodh nikalna aana chahiye, and this is one way by which you can actually make them perform. That is one very powerful way. Chalo, let me arrange one session in Nashik. देखता हूँ रुपेश कब आना होगा. Right. You have a session lined up, maybe you have a group of people lined up, then maybe we'll see. Otherwise, it's just a company visit and then I come and I go as such. So we have a question here which Santosh has asked me. Due to office politics, I've left my job and I don't know how to forget that. कि ये जॉब मुझे छोड़ना पड़ा. Forget इस चीज को भूलने का एक बड़ा अच्छा तरीका है. If you're listening to me, Ganesh, and it's for everybody, some of you, you just can't forget something bad which has happened to you. So you got to understand कि जो हो गया ना, तो वो तो वैसे भी आपके पकड़ में नहीं है. मेरी बात को ध्यान से सुना. It is just a mental game which you are playing. You are playing with something which is not there. और मैं इसको और क्रूड फॉर्म में बोलूंगा कि आप उसमें व्यस्त हो जो है नहीं. और जो इंसान उसमें व्यस्त है जो है नहीं, जो इमेजिन्ड है, उसमें खोया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? मैं दोबारा बोलता हूँ. जो इंसान उसमें व्यस्त है जो है नहीं, जो मतलब इट्स नॉट देयर, इट्स नॉट इन फ्रंट, बट उसमें खोया हुआ है. और आप किसी को देखते हो ऐसे कि यार तू किसमें खोया हुआ है? वो तो है ही नहीं, तू किसमें खोया हुआ है? लेकिन उसको मस्त है, उसको मजा आ रहा है उसमें खोने में. तो आप क्या बोलोगे उसको? आप बोलोगे ये जो है नहीं तो उसमें अपनी जिंदगी बिता रहा है, ये क्या पागलपन है? तो आपकी जॉब आपने छोड़ दी. वो छोड़ने के कारण 10 हो सकते हैं संतोष, लेकिन अभी छोड़ दी ना. नाउ द बेस्ट वे टू फॉरगेट दैट इज टू पिक अप समथिंग व्हिच इज मच मोर पावरफुल. दैट्स द ओनली वे. दैट्स वन ऑफ द श्योरेस्ट वेज टू फॉरगेट. अगर आप कुछ अच्छा बड़ा नहीं पकड़ोगे तो फिर आप उसको लेके पकड़े रहोगे. तो मैं आपसे दो चीज कह रहा हूं. एक, पकड़ो कोई चीज, और दूसरा, कोई चीज जो बड़ी है वो पकड़ो. जब बड़ी चीज को हम पकड़ेंगे तो जो हमारा जो पहले नुकसान हुआ होता है उसका गम, उसका दर्द हम भूल जाए. लेकिन अगर हमने कोई कमजोर चीज पकड़ ली तो फिर हमें वो बार बार याद दिलाएगा, यार पहले वाला इतना अच्छा था, पहले वाला इतना अच्छा था. तो हमें कुछ पकड़ना पड़ेगा. और आप तभी पकड़ सकते हो जब आपकी मुट्ठी, आपका हाथ खाली हो. आपने तो पहले से अपने पास्ट को पकड़ के रखा हुआ है इसमें, तो आप अपना आने वाला भविष्य कैसे पकड़ोगे? तो पहले पास्ट को छोड़ो और फिर भविष्य को पकड़ो. अगर आप फिजिकली भी आप अजमाना चाहते हो, कि अगर मैंने आपको कहा ये आपके हाथ में बॉटल है और मैं आपको इस हाथ में फिर आपको कह रहा हूं कि ना अभी ये पेंसिल पकड़ लो, तो ये पेंसिल पकड़ने के लिए आपको पहले ये बॉटल छोड़नी पड़ेगी और फिर आप पेंसिल पकड़ोगे. आप क्या कह रहे हो? नहीं साहब, मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे और भी कुछ आना. नहीं होगा ऐसा. पहले इसको छोड़ो, लेट गो, एंड देन यू कैन होल्ड ऑन टू समथिंग डिफरेंट. सो पहले हाथ साफ करो कि जो हो गया हो गया, क्योंकि वैसे भी आपके हाथ में कुछ नहीं है. वो तो हाथ से रेत निकल चुकी है. आपको भ्रम है, आपको इल्यूजन है, मेरे हाथ में मेरे पास कुछ है. कुछ नहीं है, मुट्ठी खाली है. आप लेकिन ऐसे पकड़ के बैठे हो कि कुछ तो है, मेरा पास्ट है, मेरा जॉब चले गया, मेरा जॉब चले गया. अरे छोड़, खुलो मुट्ठी, कुछ नहीं है अंदर. जब ऐसा हाथ खोलोगे ना तो कुछ पकड़ने को मिल जाए, फिर उसको पकड़ो. आई कांट एक्सप्लेन इट इन अ मच मोर सिंपलर वे देन दिस.
So is it, Santosh, is making sense to you? So पूरी जान लगा दो, पूरी लगन लगा दो कुछ अच्छा ढूंढने में. There's another way which people say that खुन्नस में कुछ ढूंढो. मैं खुन्नस क्यों रखना है यार, अपने पोटेंशियल है ना, इसलिए कुछ अच्छा ढूंढेंगे. कुछ लोग कहते हैं कि उनको करके दिखा दो कि तुम किस काबिल हो. क्यों किसी को करके दिखाना है? हमने खुद को प्रूव करना है, किसी और को प्रूव करने की जरूरत नहीं है. अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर काबिलियत है, तो कुछ बड़ा पकड़ो, और बड़ा पकड़ोगे तो पुराना छोटा तो वैसे भी छूट जाएगा. And this goes for everybody. This goes for everybody. Those of you who are hanging on to something, कुछ पुरानी बातें, भूली बिसरे गीत तुम गाते रहते हो, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ. अरे जिसने किया उसको याद नहीं है, और तुम्हें अब ये पुराने गीत गाने में इतना मजा आता है. हो गया, उसको छोड़ो और अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो. मेरे बैच में आ जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा और कैसे छोड़ना है. बहुत सी चीज छुड़वा दूंगा तुम्हारी. So stop repenting, regretting, cribbing, complaining. ये क्या आदतें हैं यार? क्रिप करना, कंप्लेन करना, रिग्रेट करना, रिपेंट करना, मतलब ये सब तुच्छ आदतें हैं. इन आदतों से बाहर निकलो. There is so much to be done. अप्रिशिएट करो, एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो, कॉम्प्लीमेंट करो. ये कितनी अच्छी अच्छी आदतें हैं, और कितने ये बुरी बुरी बेकार सी तुच्छ लेवल की, मतलब भिखारी पने की आदत है. कंप्लेंट करते रहो, क्रिप करते रहो, रोतड़े रहो, मतलब रोतड़ू बन के घूमते रहो. शक्ल पे ऐसा रोना लिखा हुआ है कुछ लोगों के. कुछ ना कुछ उनको रोने का कारण चाहिए, कुछ ना कुछ किसी को ब्लेम करने का कारण चाहिए. कम आउट ऑफ दैट जोन. See, there's a life beyond this. There is so much to appreciate. There's so much to be happy about. There's so much to look forward to. There's so much to acknowledge. There's so much to praise, appreciate, so much to get inspired. एक दुनिया ये भी है और एक दुनिया ये भी है. अब आपको कहाँ जीना है, आप डिसाइड करें. There's so much beautiful happening in this world. So मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है, that as you go and you live your day today and for the rest of the days and rest of the weeks and rest of your life, you got to take a call. Which side I should be in? And it's okay. People will treat you the way they want to treat you. It's okay. ये उनकी चाहत है, उनकी क्वालिटी है, उनकी प्रॉब्लम. अब आप उनकी प्रॉब्लम से या उनके बिहेवियर से आप क्यों इफेक्ट होते हो? आपने अच्छा काम किया और वो आपको अप्रिशिएट नहीं करता है. कितने लोगों को तो यही रोना है कि सर मैं कितना भी अच्छा काम करता हूँ, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता है ऑफिस में, या मेरे बॉस ने अप्रिशिएट नहीं किया, मेरी वाइफ ने अप्रिशिएट नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने अप्रिशिएट नहीं किया. अरे बाबा, उसको अप्रिसिएशन का बाईपास है. जैसे होता है कुछ लोगों का ह्यूमर बाईपास होता है. ह्यूमर बाईपास मतलब उनको कभी लाइफ में हंसते नहीं है, कभी लाइफ में ऐसे खुश नहीं होते, कभी लाइफ में ऐसा उनका लाइफ में ऐसा हैप्पीनेस का एक्सप्लोजन नहीं होता. उनको मैं बोलता हूँ ह्यूमर बाईपास. जैसे हार्ट का बाईपास होता है ना, वैसे ही उनका बाईपास हुआ है. ऐसी तरह कुछ लोगों का अप्रिसिएशन का बाईपास होता है. उनके सामने कुछ भी चीज अच्छी हो जाए वो अप्रिशिएट नहीं करते. तो ये उनका प्रॉब्लम है ना. उनके प्रॉब्लम को लेके आप क्यों दुखी होते हो यार? अरे उनको कैंसर है, तुम क्यों मर रहे हो? ये तो बड़ी विचित्र बात होगी कि बीमारी किसी को है और मर तुम रहे हो. ऐसा होता है क्या कभी? और अगर ऐसा हो रहा है कि बीमारी किसी को है, मर तुम रहे हो, तो तुम येड़े हो ना. So die from your own disease, die from your own problems. Please do not die from somebody else's problem. Somebody has an acknowledgement bypass. Somebody has an appreciation bypass. Somebody has a compliment bypass. उसका प्रॉब्लम है यार. उसका कुछ लोगों का स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट होता है ना, उनका पैदाइशी डिफॉल्ट है कि अच्छा कुछ अप्रिशिएट नहीं करते. ठीक है ना, माफ करो, उनको छोड़ दो. इट्स ओके. ब्लेस देम कि भगवान कभी इनको आ जावे, सद्बुद्धि आ जावे. इट्स ओके. दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू. बट डोंट डाई बिकॉज दे हैव अ प्रॉब्लम. Is it connecting? So from the city of this, Indore is a beautiful city. So from the city of cleanliness, this has been awarded the best clean city award 5 times. और यहाँ पे इंदौर में ना बड़े बोर्ड लगे हुए हैं छक्के के. So वो कह रहे हैं हमें 6th time in a row we want to be awarded the cleanest city in India. So पूरे शहर में ऐसी हवा है, छक्का मारेंगे. And that's so wonderful that everybody in the city is aligned to this very fact that we will score a 6. We will
be the winner sixth time. It's such a wonderful thing that it's an entire ecosystem which is playing a role here. So from the city of Indore, अभी मुझे जाना है for the function, and then I intend to go to खाओ गली. कुछ खा पी के आएंगे आज आज शाम को खाओ गली है चाट and things like that. So I'm looking forward to the evening also, and I'm looking forward to the function of the inauguration of the unit where I'll be going there as a chief guest. So that's what I'm looking forward to. The Sarafa Gali, yes, yes, Sarafa. So yes, Anjali, when people don't appreciate, it's their problem. So it's not our problem. Don't worry. Don't worry. So make a great, great day and a great week for yourself. And I'll connect with you next week from Pune, directly from Pune. And do send in your questions. If you have any questions you would like to share with me, do write your questions. Like Santosh asked this question and I could give him some clarity. So, Santo Ganesh, are you author? Oh yes, a couple of books are on the way. Just ये टाइम नहीं मिलता ना मुझे थोड़ा सा अटक जाता हूँ but I'm sure next near future you will have a few books from my side. Yes, yes. अभी मैं तुम्हें गोल देता हूँ तुम मुझे गोल दे दो हाँ this year itself. Yes. चलो, hope to see you and I'll see you again next week.